Navigating the economic maelstrom, no respite from old woes in New Year. A look back at why 2022 was rough on the economic front and why things may not change in the new year. Muhammad Omer Hayat. Published January 1, 2023. Dawn. Subscribe your own channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. The year 2022 has been a nightmare for Pakistan on the economic front. Everything is much more expensive as we witness decades-high inflation, the rupee has plummeted, there are fears the country may default as the central bank's reserves remain critically low and industry is struggling to operate with many large companies partially suspending operations. The already fragile situation worsened when floods ravaged large parts of the country, destroying almost half the country's agricultural land and sweeping away entire villages. Some estimates put damages from floods at $30 billion. It seems Murphy's Law has found a comfortable home in Pakistan. Why is this happening all at once? Let's step back and look at why we are in this situation and how we got here. History. Pakistan has a basic budgeting problem, often referred to by experts as a structural problem. We continue to spend more than we earn. And we have been doing so for decades. This is true for our fiscal budget, presented each year by the federal government in June, as well as our balance of payment. Our imports heavily outweigh our exports. Over the decades, Pakistan's policymakers have miserably failed in creating a framework that incentivizes manufacturing at home, and as a result, we have been unable to shore up our exports. Our industry continues to lag behind the world and we have been unable to add value, even where we can, to compete internationally. A lot of it has to do with dismal levels of investment in human capital. Large parts of the population, especially women, remain outside the education net, which is why innovation and entrepreneurship have not taken deep roots in our national fabric. And to top it all off, our economic policy structure encouraged imports. It won't be completely off the mark to say it all comes down to the dollar. Let me explain. Pakistan has for decades opted for a fixed exchange rate regime. For years on end, the dollar oscillated between the 90 to 100 rupees band by design when the actual rate, had it been left to market forces, would have been much higher. Often referred to as Daronomics, taking its name from our incumbent finance minister, this policy was akin to a drug for our country. That's because it incentivized imports by making them cheaper, while at the same time it hurt our exports by making our goods expensive in the international market. As time passed by, our industry became addicted to cheap imports while our exports struggled to compete globally. Instead of manufacturing inside Pakistan, improving our production processes and bringing more and more components of the supply chain inside the country, we kept taking the easy way out by importing goods and machinery. Today, there is hardly any industry in Pakistan that can continue operations uninterrupted without importing key components. On the flip side, a market-based exchange rate would have pushed our businesses to rethink this strategy, in some cases simply because importing would not have made economic sense. It is important to understand that these business processes and habits take years to develop and perfect. None of this happens overnight. Therefore, even though Pakistan has now shifted to a market-based exchange rate regime, under IMF pressure, it will take time to find a new equilibrium while we go through this painful phase of inflation and economic stagnation. Consequences. Now that we have established the root of the disease, let's look at how it translates into the onset of symptoms. The structural issue discussed above means that our forex reserves perpetually remain under pressure because our current account deficit keeps spiraling out of control, and therefore, any economic growth that comes with it is unsustainable because it comes at the cost of our reserves. With imports overshadowing exports, Pakistan is always on the qui-vive for dollars. When the country does not have enough dollars to meet its external obligations, i.e., make payments for debts and essential imports, it is staring at default. To avoid this, Pakistan has been scrambling to the IMF to bail it out every few years over the past 6 decades.
Pakistan signed its first standby arrangement with the IMF in 1959. Since then, we have gone to the IMF multiple times every decade, twice in the 60s, 4 times in the 70s, twice in the 80s, 5 times in the 90s, thrice in the 2000s, and twice since 2013, with the last program signed in 2019 still ongoing. The IMF, or the lender of last resort, comes into play when countries have nowhere else to go. Its objective is to not simply dole out the money but also require countries to address the problems that led them into the crisis in the first place. Inflation. As a result, during its latest program that began in 2019, the international lender strong-armed Pakistan into making the changes it should have made decades ago: a market-based exchange rate, an autonomous central bank free from government pressure, higher tax revenues, and so on and so forth. For a country, and politicians, addicted to the high of cheap imports, tax evasion, and printing money on a whim, these changes have pushed us into a painful phase. Because we are heavily reliant on imports for our consumption, a market-based exchange rate regime that caused the dollar to rally considerably has seen Pakistanis reel with inflation since 2020. Global impact. In 2022, however, the inflation problem was exacerbated because of international factors as well as an unprecedented natural disaster. Prices have gone up globally after supply chain disruptions in the aftermath of the coronavirus pandemic and the fallout of the Russia-Ukraine war. In particular, oil prices shot through the roof, surpassing $100 per barrel, after Russia's invasion of Ukraine on supply concerns, since Russia is a major supplier. This not only caused petrol prices to surge in the country, but also had a significant impact on electricity prices, since Pakistan's energy mix is heavily skewed towards fossil fuels. And the floods that damaged around 45% of our cultivable land also caused shortages of essential food items, which had to be imported to meet domestic needs. With all these factors combined, Pakistan saw 5 decades high CPI inflation of 27.3% in August. Although it has eased slightly since then, the outlook is not rosy, with the state bank expecting inflation for financial year 2023 to fall between 21 to 23%. Central banks across the world tame inflation through hiking interest rates, which leads to an economic slowdown, known as monetary tightening or a contractionary monetary policy. But even though 2022 saw the state bank hike its main policy rate by 6.25 percentage points to a 24-year high of 16%, inflation continued to remain well above 20%, indicating that the rise in prices is not demand-induced but a result of supply-side factors, such as a rise in the cost of critical raw materials. Forex reserves and default threat. As Pakistan's forex reserves kept falling throughout 2022, the political chaos in the country certainly did not help the economy, as it threatened to derail the IMF program. Facing an inevitable ouster, the previous government put in place a petrol subsidy, even though it violated the international lenders' conditions for the release of funds. When the new government came to power in April, much to everyone's surprise, it continued with the subsidy for another 2 months, causing losses to the national exchequer and giving rise to fears of default. During this time, Prime Minister Shehbaz Sharif toured Saudi Arabia and the UAE in a bid to secure funds for the country, but was asked to first put things in order with the IMF. Eventually, the government took the difficult decision to do away with the subsidy in phases and increase the price of petrol at a time when inflation was already soaring. After critical talks with the IMF on the 7th and 8th review of the program, led by then Finance Minister Miftah Ismail, Pakistan was able to secure $1.1 billion from the lender in August, averting the threat of default for the time being. But that victory was short-lived, because in less than 2 months, Finance Minister Ismail was sent packing, and in came the father of Daronomics, Ishaq Dar, who promised to bring the dollar back to 180 from the mid-200s. It did not take long for the default mantra to make its way back into the mainstream, because despite the IMF's money and Saudi Arabia rolling over its deposits, Pakistan's obligations remained much more than its inflows. By October,
Pakistan was expecting to have received another $1.2 billion from the IMF after the 9th review of the ongoing program, but the tranche has been delayed, apparently due to an impasse between the two sides over the revenue target and the lender's concerns over accuracy of budgeted flood expenditure. This delay fed into default fears, with Pakistan's perceived default risk, measured by the 5-year credit default swap, soaring to over 100% in late November. But in what was seen as a rare positive, Pakistan repaid a $1 billion international bond in December 2 days before its maturity, putting the risk of immediate default to rest. Despite that, the situation remains precarious. As of December 23, reserves with the state bank stood at $5.8 billion, the lowest in 8 years and barely enough to cover a month's imports. With Pakistan's international payment obligations for the ongoing financial year, which ends in June, still in excess of $13 billion and the forex reserves cutting a sorry figure, fears of default remain. The IMF tranche is critical for Pakistan, even though it is less than a tenth of the size of the country's pending payments, because it acts as a green signal for other lenders. Even Pakistan's friends, Saudi Arabia and China, from whom the finance minister promised $13 billion worth of inflows 2 months ago, have come forward with assurances only as they wait for the IMF to move first. In such a situation, the finance minister's outburst against the IMF on live TV in December did nothing other than add to the market's jitters and reveal that Pakistan and IMF were at odds over the 9th review. Even though the government has repeatedly assured us that we won't default, unless there is clarity on when and from where the inflows will come, these words would continue to ring hollow. It does not help our case that 3 of the world's top ratings agencies, Fitch, Moody's and S&P, downgraded Pakistan's long-term sovereign debt rating into junk in 2022. Import restrictions. In a bid to protect its dwindling forex reserves and indirectly influence the soaring dollar exchange rate, which rose 27% in 2022, from 178 rupees on January 1 to 226 rupees on the last working day of the year, the government first banned the import of luxury items for 2 months, eventually lifting the ban in July. But since then, the central bank has imposed administrative restrictions, requiring banks to seek permission from it before initiating any import transaction, leading to delays in opening of letters of credit, LCs, and hurting several businesses in the country that were dependent on imports to continue operations. As a result, several automakers, including Indus Motor and Suzuki, suspended operations temporarily, citing import delays due to which they could not run their plants. Similarly, the textile sector also faced production hits owing to supply disruptions, depressed demand and liquidity constraints, with one of Pakistan's largest textile mills, Nishat Chunian, partially suspending operations. Dollar, interbank versus black market. The government's policy to ration the dollar by imposing administrative restrictions on those looking to buy it led to another major issue, the rise of the black market. With the dollar not easily available through formal means, its price in the black market began rising. By the end of the year, the spread between the interbank rate, 225 rupees, and the black market rate, 255 rupees, widened to almost 13%. This discrepancy has adversely impacted remittances, a crucial way for Pakistan to earn its dollars. Because the black market is offering a much higher return, expats sending money home have opted to use hawala and hundi as opposed to formal banking channels, which experts believe is one of the reasons why Pakistan has seen 3 consecutive months of decline in remittances. Stocks down, gold outshines all. When there's economic uncertainty, currency devaluation and high inflation, the usual investments in stocks and bonds do not remain as lucrative. This was seen in Pakistan's case as well, with the stock market losing 9.3% of its value in 2022. Gold, on the other hand, which is a defensive investment in uncertain times, shot up over 40%, outshining all other assets, as investors flocked to it hoping to store the value of their wealth. The Great Stagflation. After a roller coaster ride, where does Pakistan stand at the end of the year? And what's the way forward?
To answer these questions, I talked to a few economists. Almost everyone agreed that Pakistan had now stepped into an economic slowdown. We're very much in a recession, said Dr. Hafiz Pasha, former UN Assistant Secretary General and Federal Minister. He said both domestic and global factors had induced this, noting that there's a slowdown in economic activity globally. In Pakistan's case, he said, the already adverse situation had been exacerbated by floods. Industrial production fell 7% in October, while agriculture is also expected to see a plunge of around 6%, he said. We'd be lucky if we see even 1.5% GDP growth this year. Sajid Amin Javed, a macroeconomist with the Sustainable Development Policy Institute, said Pakistan is going through a period of stagflation, a phenomenon when economic slowdown and high rates of inflation coexist. With headline inflation rate continuing to stay in the high 20s while industrial and agricultural growth was declining, he termed it the Great Stagflation. Javed said Pakistan's best-case scenario this fiscal year was a 3.5% growth, almost half the 6% achieved a year ago, while inflation outlook remains around 23%. Shahrukh Wani, economist at the Blavatnik School of Government, University of Oxford, said Pakistan is going through an unmistakably significant economic crisis which hadn't translated into a recession yet but had led to a significant reduction in economic growth both because of government measures to stabilize the macro outlook and the reduced confidence of investors. He said the administrative measures taken by the government to curtail imports had particularly dragged down economic activity. Maha Rahman, a research fellow at the Mahbub-ul Haq Research Center at LUMS and a former faculty member there, said the global slowdown along with our fiscal fundamentals was leading the economy into a recession. The political uncertainty will not make it any easier since the political parties in power will be extremely wary of making the tough economic decisions required in this climate. Tough times ahead. Javed said it takes a long time to come out of stagflation since there are not many policy options at disposal, which is why there are long-term social and economic costs associated with it. Among his key recommendations, Javed said the government will have to convince the IMF to lower tax revenue targets in light of floods and in return reduce or remove taxes from some key items. To check food inflation, he said, the government needed to remove taxes, especially sales tax, on essential food items as well as do away with import duties on them. He also recommended formation of price control committees at the district level to ensure there was no hoarding and profiteering. He said social protection cash flows for lower income groups through BISP needed to be revised upwards by 25% to protect people's purchasing power. Wani said Pakistan needs an explicit short-term roadmap for the next year that includes a clear commitment to implementing the IMF program, including a pledge to the market-based exchange rate and a strategy to service its debt. If debt restructuring is needed, it is better to do so sooner than later. Wani went on to say there will likely be a significant contraction in economic activity and an increase in the cost of living over the coming year, and so the government needs to direct its spending to effectively target lower-income groups. He said it was critical to recognize that the current crisis is a symptom of long-run structural challenges in Pakistan's economy that include low levels of productivity and domestic savings. These challenges have made Pakistan's growth fundamentally constrained by its balance of payments, leading to repeated macroeconomic crises. A credible break from the current crisis requires undertaking long overdue reforms that target these structural impediments to economic growth, he said. Raymond said the government will need to start incentivizing increased productivity investment and increased production in export sectors in order to cushion the impact on export slowdown and potential job losses. Similarly, the policy focus will need to shift away from sectors that lock capital in unproductive areas. The fuel mix will need active policy intervention and the government will need to proactively change policy focus to mitigate impact. An abridged version of this article was published in Dawn, January 1, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning.
साल 2022 माशी महाज पर पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। हर चीज बहुत ज्यादा महंगी है क्योंकि हम दहाइयों से ज्यादा इफरात ज़र का मुशाहिदा करते हैं। रुपया गिर गया है। खदशा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है क्योंकि मरकजी बैंक के ज़खायर इंतहाई कम हैं और सनत काम करने के लिए जिदोजहद कर रही है और बहुत सी बड़ी कंपनियों ने जुज़वी तौर पर काम मुअत्तल कर दिया है। पहले से ही नाजुक सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो गई जब सैलाब ने मुल्क के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया, जिससे मुल्क की तकरीबन आधी ज़री ज़मीन तबाह हो गई और पूरे गांव बह गए। कुछ अंदाजों के मुताबिक सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना $30 अरब लगाया गया है। ऐसा लगता है कि मर्फी के कानून को पाकिस्तान में एक आरामदेह और पुरसुकून घर मिल गया है। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? आइए पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हम इस सूरत हाल में क्यों हैं और हम यहाँ कैसे पहुंचे। तारीख। पाकिस्तान में बजट का बुनियादी मसला है जिसे माहिरीन अक्सर सख्ती मसला करार देते हैं। हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते रहते हैं और हम कई दहाइयों से ऐसा कर रहे हैं। ये हमारे माली बजट के बारे में सच है जो हर साल जून में वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता है और उसके साथ साथ हमारी अदायगी के तवाज़ुन, हमारी दरामदात हमारी बरामदात से कहीं ज्यादा हैं। कई दहाइयों से पाकिस्तान के पॉलिसी साज एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं जो अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करता है और उसके नतीजे में हम अपनी बरामदात को बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। हमारी सनत दुनिया से पीछे है और हम बैन अल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करने के लिए कदर में इजाफा करने में नाकाम रहे हैं, यहाँ तक कि जहाँ हम कर सकते हैं। इसमें से बहुत कुछ इंसानी सरमाया में सरमायाकारी की मायूस कुन सतह से है। आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर पर ख्वातीन, तालीम के जाल से बाहर रहती हैं। यही वजह है कि जिद्दत तराजी और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमारे कौमी ताने बाने में गहरी जोड़ें नहीं पकड़ी है। और सबसे ऊपर हमारी इक्तिसादी पॉलिसी के ढांचे ने दरामदात की हौसला अफजाई की। ये कहने के लिए यह मुकम्मल तौर पर निशान से दूर नहीं होगा कि ये सब डॉलर के नीचे आता है। मुझे वजाहत करने दो। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से एक मुकर्ररा शरह मुबादला का इंतखाब किया है। कई सालों तक डॉलर डिजाइन के लिहाज से 90 से 100 रुपए के बैंड के दरमियान घूमता रहा, जबकि असल कीमत अगर उसे मार्केट की कुव्वतों पर छोड़ दिया जाता तो ये बहुत ज्यादा होता। अक्सर डार्विनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका नाम हमारे मौजूदा वजीर खजाना से लेकर यह पॉलिसी हमारे मुल्क के लिए एक मुनशियात के मुतरादिफ थी। इसकी वजह यह है कि इसने दरामदात को सस्ता करके उनकी हौसला अफजाई की, जबकि साथ ही इसने बैन अल-अक़वामी मार्केट में हमारे सामान को महंगा करके हमारी बरामदात को नुकसान पहुंचाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी सनत सस्ती दरामदात की आदी होती गई, जबकि हमारी बरामदात आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए जिदोजहद करती रही। पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अपने पैदावारी अमल को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन के ज्यादा से ज्यादा अज्जा को मुल्क के अंदर लाने के बजाय हम सामान और मशीनरी दरामद करके आसान रास्ता इख्तियार करते रहे। आज पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी सनत हो जो अहम अज्जा की दरामद के बगैर बिला तातुल काम जारी रख सके। दूसरी तरफ मार्केट पर मबनी तबादले की शरह ने हमारे कारोबारी इदारों को इस हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने के लिए धक्का दिया है, कुछ मामलात में सिर्फ इस वजह से कि दरामद इक्तिसादी मानी नहीं रखता है। यह समझना जरूरी है कि उन कारोबारी अमलों और आदात को तरक्की देने और कामिल होने में सालों लगते हैं। इसमें से कुछ भी रातों रात नहीं होता है। लिहाजा अगरचे पाकिस्तान अब IMF के दबाव में मार्केट पर मबनी शरह मुबादला के निज़ाम की तरफ मुंतकिल हो चुका है, लेकिन जब हम इफरात ज़र और माशी जमूद के इस तकलीफ दे मरहले से गुजर रहे हैं तो एक नया तवाज़ुन तलाश करने में वक्त लगेगा। नताइज। अब जबकि हमने बीमारी की जड़ कायम कर दी है, आइए देखते हैं कि यह अलामात के आगाज में किस तरह तर्जमा करता है। मज़कूरा बाला साख्ती मसले का मतलब यह है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तकिल तौर पर दबाव में रहते हैं क्योंकि हमारा करंट अकाउंट खसारा काबू से बाहर होता रहता है और इस वजह से इसके साथ आने वाली कोई भी माशी नमू नाकाबिल बर्दाश्त है क्योंकि यह हमारे ज़खायर की कीमत पर आती है। दरामदात बरामदात पर हावी होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा डॉलर के मुकाबले में सबसे आगे रहता है। जब मुल्क के पास अपनी बैरूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काफी डॉलर नहीं हैं,
यानी कर्जों और ज़रूरी दरामदात की अदायगी करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट की तरफ देख रहा है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता 6 दहाइयों से हर चंद सालों में IMF को बेल आउट करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। पाकिस्तान ने 1959 में IMF के साथ अपने पहले स्टैंड बाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसके बाद से हम हर दहाई में कई बार IMF के पास जा चुके हैं। 60 की दहाई में 2 बार, 70 की दहाई में 4 बार, 80 की दहाई में 2 बार, 90 की दहाई में 5 बार, 2000 की दहाई में 3 बार और 2013 के बाद से 2 बार 2019 में दस्तखत शुदा आखिरी प्रोग्राम अब भी जारी है। IMF आखिरी हरबे का कर्ज दहिंदा इस वक्त खेल में आता है जब ममालिक के पास जाने के लिए कहीं और नहीं होता है। इसका मकसद न सिर्फ पैसा देना है बल्कि ममालिक को इन मसाइल को हल करने की भी ज़रूरत है जो उन्हें बुहरान की तरफ ले गए। इफरात ज़र नतीजतन 2019 में शुरू होने वाले अपने ताज़ा तरीन प्रोग्राम के दौरान बैन अल-अक़वामी कर्ज दहिंदा ने पाकिस्तान को वो तब्दीलियां करने के लिए मजबूत मुसल्ला किया जो इसे दहाइयों पहले करना चाहिए था। मार्केट पर मबनी तबादले की शरह, हुकूमत के दबाव से आज़ाद एक खुद मुख्तार मरकजी बैंक, आला टैक्स आमदनी और उसी तरह वगैरह। एक ऐसे मुल्क और सियासतदानों के लिए जो सस्ती दरामदात, टैक्स चोरी और एक झंझट पर पैसा छापने के आदी हैं, इन तब्दीलियों ने हमें एक तकलीफदेह मरहले में धकेल दिया। चूंकि हम अपनी खपत के लिए दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, लिहाजा मार्केट पर मबनी शरह मुबादला का निज़ाम जिसकी वजह से डॉलर में नुमाया इजाफा हुआ है ने 2020 के बाद से पाकिस्तानियों को इफरात ज़र का सामना करते हुए देखा है। आलमी असरात तरमीम। ताहम 2022 में इफरात ज़र का मसला बैन अल-अक़वामी अवामिल के साथ साथ एक गैर मामूली कुदरती आफत की वजह से बढ़ गया था। कोरोना वायरस, वबाई अमराज और रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में सप्लाई चेन में खलल पड़ने के बाद आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है। खास तौर पर तेल की कीमतों ने छत के जरिए गोली मार दी, $100 फी बैरल से तजावुज कर गया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सप्लाई के खदशात पर, क्योंकि रूस एक बड़ा सप्लायर है, इसकी वजह से न सिर्फ मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ बल्कि बिजली की कीमतों पर भी नुमायां असर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स जीवाश्म ईंधन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखता है और सैलाब जिसने हमारी काबिल काश्त जमीन के तकरीबन 45% हिस्से को नुकसान पहुंचाया, इसकी वजह से ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया की भी किल्लत पैदा हुई जिन्हें घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरामद करना पड़ा। इन तमाम अवामिल को मिलाकर देखा जाए तो अगस्त में पाकिस्तान में 5 दहाइयों की बुलंद तरीन CPI इफरात ज़र की शरह 27.3% रही। अगरचे इसके बाद से इसमें कदरे नरमी आई है, लेकिन स्टेट बैंक को माली साल 2023 के लिए इफरात ज़र की शरह 21 से 23% के दरमियान गिरने की तवक्को के साथ खुशगवार नहीं। दुनिया भर के मरकजी बैंक शरह सूद में इजाफे के जरिए इफरात ज़र पर काबू पाते हैं, जिसकी वजह से माशी सुस्त रवि पैदा होती है, जिसे मॉनेटरी सख्ती या सुकड़ने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगरचे 2022 में स्टेट बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी रेट में 6.25% पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 24 साल की बुलंद तरीन सतह 16% कर दिया, इफरात ज़र 20% से ऊपर ही रहा, जिससे जाहिर होता है कि कीमतों में इजाफा तलब की वजह से नहीं बल्कि सप्लाई साइड अवामिल का नतीजा है, जैसे अहम खाम माल की कीमत में इजाफा, ज़र मुबादला के ज़खायर और डिफ़ॉल्ट खतरा। चूंकि 2022 के दौरान पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते रहे, लिहाजा मुल्क में सियासी अफरा-तफरी ने यकीनी तौर पर मईशत की मदद नहीं की, क्योंकि इससे IMF प्रोग्राम को पटरी से उतारने का खतरा था। नागुज़ीर बेदखली का सामना करते हुए पिछली हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी नाफिज कर दी, हालांकि उसने फंड्स के इजरा के लिए बैन अल-अक़वामी कर्ज दहिंदा की शराइत की खिलाफ वर्जी की थी। अप्रैल में जब नई हुकूमत इक़्तिदार में आई तो सबको हैरत हुई कि उसने मजीद 2 माह तक सब्सिडी जारी रखी, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा और डिफ़ॉल्ट के खदशात में इजाफा हुआ। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए फंड्स हासिल करने के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, लेकिन उनसे कहा गया कि वो पहले IMF के साथ मामलात तय करें। बिलाखिर हुकूमत ने मरहलावार सब्सिडी खत्म करने और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मुश्किल फैसला ऐसे वक्त में किया जब इफरात ज़र पहले ही उरूज पर था।
इस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की सरबराही में प्रोग्राम के 7वें और 8वें जायजे पर IMF के साथ तनकीदी मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान अगस्त में कर्ज दहिंदा से $1.1 बिलियन हासिल करने में कामयाब रहा, जिससे फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया। लेकिन यह फतह कलील मुद्दती थी, क्योंकि 2 माह से भी कम अरसे में वजीर खजाना इस्माइल को पैकिंग भेज दिया गया और डार्वनोमिक्स के वालिद इसहाक डार आए, जिन्होंने 200 की दहाई के वस्त से डॉलर को 180 पर वापस लाने का वादा किया था। डिफ़ॉल्ट मंतर को मरकजी धारे में वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि IMF के पैसे और सऊदी अरब की जानिब से इसके डिपॉजिट्स खत्म करने के बावजूद पाकिस्तान की जिम्मेदारियां इसके बहाव से कहीं ज्यादा रहीं। अक्टूबर तक पाकिस्तान को तवक्को थी कि जारी प्रोग्राम के नवीं जायजे के बाद IMF से मजीद $1.2 अरब मिल जाएंगे, लेकिन इस किस्त में ताखीर हुई है, जिसकी वजह बज़ाहिर महसूलात के हदफ पर दोनों फरीकों के दरमियान तातुल और बजट में सैलाब के अखराजात की दुरुस्तगी पर कर्ज दहिंदा के खदशात हैं। इस ताखीर ने डिफ़ॉल्ट खौफ में इजाफा किया। पाकिस्तान के समझे जाने वाले डिफ़ॉल्ट रिस्क के साथ, जिसकी पैमाइश 5 साला क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वीप के जरिया की जाती है, नवंबर के आखिर में 100% से ज्यादा बढ़ गए। लेकिन एक गैर मामूली मुस्बत के तौर पर देखा गया था। पाकिस्तान ने दिसंबर में $1 अरब के बैन अल-अक़वामी बॉन्ड को उसकी पुख्तगी से 2 दिन पहले अदा कर दिया, जिससे फौरी तौर पर डिफ़ॉल्ट के खतरे को खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद सूरत हाल गैर यकीनी है। 30 दिसंबर तक स्टेट बैंक के पास ज़खायर $5.8 अरब थे, जो कि 8 साल में सबसे कम हैं और बमुश्किल 1 माह की दरामदात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। जून में ख़त्म होने वाले रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी अदायगियों की जिम्मेदारियां अब भी $13 अरब से ज़ायद हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में अफसोसनाक अदाद और शुमार में कमी आई है। डिफ़ॉल्ट के खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। IMF की किस्त पाकिस्तान के लिए अहम है, अगरचे ये मुल्क के ज़ेर इल्तिवा अदायगियों के साइज़ के 10वीं हिस्से से भी कम है, क्योंकि ये दूसरे कर्ज दहिंदगान के लिए ग्रीन सिग्नल के तौर पर काम करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब और चीन, जिनसे वजीर खजाना ने 2 माह कबल $13 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था, सिर्फ इस यकीन दहानी के साथ आगे आए हैं क्योंकि वो पहले IMF के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दिसंबर में बराह रास्त टीवी पर IMF के खिलाफ वजीर खजाना की इश्तिआल अंगेजी ने मार्केट की परेशानियों में इजाफा करने और ये जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं किया कि नवी जायजे पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तिलाफात थे। हालांकि सरकार ने बार बार हमें यकीन दिलाया है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, जब तक कि ये वाज़े नहीं हो जाता कि ये सरमाया कब और कहां से आएगा, तब तक ये अल्फाज खोखले होते रहेंगे। इससे हमारे मामले में कोई मदद नहीं मिलती है कि दुनिया की 3 सरे फहरिस्त रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज और S&P ने 2022 में पाकिस्तान की तवील मुद्दती खुद मुख्तार कर्जों की दर्जाबंदी को रद्दी की टोकरी में तब्दील कर दिया। दरामद पाबंदियां अपने गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाने और डॉलर की बढ़ती हुई शरह तबादला पर बिलवास्ता तौर पर असरअंदाज होने के लिए, जो 2022 में 27% बढ़ गया। 1 जनवरी को 178 रुपए से साल के आखिरी काम के दिन 226 रुपए तक हुकूमत ने पहले 2 माह के लिए लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। बिलाखिर जुलाई में पाबंदी उठा ली, लेकिन इसके बाद से मरकजी बैंक ने इंतजामी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बैंकों को किसी भी दरामदी ट्रांजैक्शन को शुरू करने से पहले इससे इजाजत लेने की जरूरत होती है, जिसके नतीजे में लीटर ऑफ क्रेडिट LC खोलने में ताखीर होती है और मुल्क में कई कारोबारी इदारों को नुकसान पहुंचा है जो ऑपरेशन जारी रखने के लिए दरामदात पर मुनहसिर थे। इसके नतीजे में इंडस मोटर और सुजुकी समेत मुतअद्दिद ऑटोमेकर्स ने दरामदात में ताखीर का हवाला देते हुए आर्जी तौर पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने प्लांट्स नहीं चला सके। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर को भी रसद में खलल, तलब में कमी और लिक्विडिटी की रुकावटों की वजह से पैदावारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल्स में से एक नशात चूनिया ने जिज़वी तौर पर अपना काम मुअत्तल कर दिया। डॉलर इंटरबैंक बमुकाबला ब्लैक मार्केट। डॉलर खरीदने के ख्वाहा अफराद पर इंतजामी पाबंदियां आयद करके डॉलर को राशन देने की हुकूमत की पॉलिसी ने एक और बड़ा मसला पैदा किया, ब्लैक मार्केट का उरूज। डॉलर के रस्मी ज़राए से आसानी से दस्तयाब न होने की वजह से ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बढ़ने लगी। साल के इख्तिताम तक इंटरबैंक रेट 225 रुपए
और ब्लैक मार्केट रेट 255 रुपये के दरमियान फैलाव तकरीबन 13% तक बढ़ गया। इस तफावत ने तरसीलात ज़र पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, जो पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाने का एक अहम तरीका है। चूंकि ब्लैक मार्केट बहुत ज्यादा मुनाफा की पेशकश कर रही है, लिहाजा घर पैसा भेजने वाले गैर मुल्कियों ने बाज़ाब्ता बैंकिंग चैनल्स के बरक्स हवाला और हुंडी का इस्तेमाल करने का इंतखाब किया है, जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये एक वजह है कि पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में लगातार 3 माह की कमी देखी गई है। स्टॉक में कमी, सोने ने सबको पीछे छोड़ दिया। जब माशी गैर यकीनी सूरत हाल, करेंसी की कदर में कमी और आला अफराद ज़र होता है, तो स्टॉक और बॉन्ड्स में मामूल की सरमायाकारी इतनी मुनाफा बख्श नहीं रहती है। ये पाकिस्तान के मामले में भी देखा गया था। 2022 में स्टॉक मार्केट में उसकी कीमत का 9.3% खो गया था। दूसरी तरफ सोना, जो गैर यकीनी औकात में एक दिफाई सरमायाकारी है, ने 40% से ज्यादा का इजाफा किया, जिससे दूसरे तमाम असासों को पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि सरमायाकार अपनी दौलत की कदर को ज़ख़ीरा करने की उम्मीद में इसकी तरफ राग़िब हुए। अजीम तातुल तरमीम। रोलर कोस्टर की सवारी के बाद साल के आखिर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? इन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने चंद माहिरीन इक़्तिसादियात से बात की। तकरीबन हर कोई इस बात पर मुत्तफ़िक़ था कि पाकिस्तान अब माशी सुस्त रवी की तरफ बढ़ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना है कि हम कसाद का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू और आलमी दोनों अवामिल ने उसकी हौसला अफजाई की है, ये नोट करते हुए कि आलमी सतह पर माशी सरगर्मियों में सुस्त रवी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामले में पहले से ही खराब सूरत हाल सैलाब की वजह से मज़ीद खराब हो गई है। उन्होंने कहा, अक्टूबर में सनती पैदावार में 7% कमी वाक़ई हुई है, जबकि ज़राअत में भी तकरीबन 6% की कमी मुतवक्कै है। हम खुश किस्मत होंगे अगर हम इस साल 1.5% GDP की तरक्की भी देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मैक्रो इकोनॉमिस्ट साजिद अमीन जावेद का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त जमूद के दौर से गुजर रहा है। ये एक ऐसा रुझान है जब माशी सुस्त रवी और इफरात ज़र की बुलंद शरह एक साथ मौजूद है। हेडलाइन इफरात ज़र की शरह 20 की दहाई की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है, जबकि सनती और ज़री नमू में कमी आ रही है। उन्होंने इसे अज़ीम स्टैगफ्लेशन करार दिया। जावेद ने कहा कि रवां माली साल में पाकिस्तान की बेहतरीन सूरत हाल 3.5% शरह नमू थी, जो एक साल कबल हासिल की गई 6% शरह नमू का तकरीबन निस्फ है, जबकि इफरात ज़र का नुक्ता नज़र 23% के करीब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिलोतनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माहिर इक़्तिसादियात शाहरुख ख़वानी ने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाबिल यकीन हद तक अहम माशी बहरान से गुजर रहा है, जिसने अभी तक कसाद में तर्जमा नहीं किया था, लेकिन मैक्रो आउटलुक को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दामात और सरमायाकारों के कम एतमाद की वजह से माशी नमू में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि दरामदात को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए इंतजामी इक़दामात ने ख़ास तौर पर माशी सरगर्मियों को कम किया है। लम्स के महबूबुल हक रिसर्च सेंटर में रिसर्च फेलो और वहां की साबिक फैकल्टी मेंबर माहा रहमान ने कहा कि आलमी सुस्त रवी और हमारे मालियाती बुनियादी उसूल मईशत को कसाद की तरफ ले जा रहे हैं। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल उसे आसान नहीं बनाएगी, क्योंकि इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमातें इस माहौल में ज़रूरी सख्त माशी फैसले करने से बहुत मोहतात रहेंगी। आगे मुश्किल वक्त। जावेद ने कहा कि इस तातुल से बाहर आने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि पॉलिसी के बहुत से ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से इसके साथ तवील मुद्दती समाजी और माशी अखराजात वाबस्ता हैं। जावेद ने कहा कि अपनी अहम सिफारिशात में हुकूमत को IMF को इस बात पर कायल करना होगा कि वो सैलाब की रोशनी में टैक्स महसूलात के अहदाफ को कम करे और उसके बदले में कुछ अहम अशिया से टैक्सों को ख़त्म करे। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई इफ़रात ज़र पर काबू पाने के लिए हुकूमत को अशिया खुर्दोनोश पर टैक्सेस बिलखुसूस सील्स टैक्स ख़त्म करने के साथ साथ उन पर दरामदी ड्यूटी ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़िलाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील देने की भी सिफारिश की, ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफा खोरी न हो। उन्होंने कहा कि BISP के ज़रिए कम आमदनी वाले ग्रुपों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नकद बहाव को 25% तक नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बचाया जा सके।
वानी ने कहा कि पाकिस्तान को अगले साल के लिए एक वाज़ेह कलील मुद्दती रोड मैप की ज़रूरत है, जिसमें IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद का वाज़ेह अज़्म शामिल है, जिसमें मार्केट पर मबनी तबादले की शरह का अहद और अपने कर्जों को पूरा करने की हिकमत अमली शामिल है। अगर कर्जों की तंजीम नो की ज़रूरत है तो बेहतर है कि जल्द अज जल्द ऐसा किया जाए। वानी ने मजीद कहा कि आने वाले साल में माशी सरगर्मियों में नुमाया कमी और जिंदगी गुजारने की लागत में इजाफे का इम्कान है, लिहाजा हुकूमत को कम आमदनी वाले ग्रुपों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाने के लिए अपने अखराजात की हिदायत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि मौजूदा बहरान पाकिस्तान की मईशत में तवील मुद्दती साख्ती चैलेंजों की अलामत है, जिसमें पैदावारी सलाहियत की कम सतह और घरेलू बचत शामिल है। इन चैलेंजेस ने पाकिस्तान की तरक्की को बुनियादी तौर पर अदायगियों के तवाज़ुन की वजह से महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से बार बार मैक्रो इकनॉमिक बहरान पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान से एक काबिल एतमाद वक्फे के लिए तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा इस्लाहात करने की ज़रूरत है, जो माशी नमू में उन साख्ती रुकावटों को निशाना बनाते हैं। रहमान ने कहा कि हुकूमत को पैदावारी सरमायाकारी में इजाफे और बरामदी शुबों में पैदावार में इजाफे की हौसला अफजाई शुरू करने की ज़रूरत होगी, ताकि बरामदी सुस्त रवी और मुलाजमतों के मुमकिना नुकसानात पर पड़ने वाले असरात को कम किया जा सके। इसी तरह पॉलिसी की तवज्जो को उन शुबों से दूर करने की ज़रूरत होगी जो गैर पैदावारी इलाकों में सरमाए को बंद करते हैं। ईंधन मिक्स को फ़ाल पॉलिसी मुदाखलत की ज़रूरत होगी और हुकूमत को असरात को कम करने के लिए पॉलिसी की तवज्जो को फ़ाल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत होगी। इस मज़मून का एक मुख्तसर वर्जन 1 जनवरी 2023 में शाये हुआ था। For more videos, subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.